Welcome back to my channel, that is Chemistry by Derek Gandhari and supported by Alman. In the previous lecture, we talked about the chapter number 5, that is surface chemistry, and already we discussed about absorption, what is basic difference between adsorption and absorption, what is absorbate and what is absorbent, what is the mechanism of adsorption, what is the type of application, type of adsorption, physisorption and chemisorption, wide difference between physisorption and chemisorption, that is already given in your textbook and we discussed about in deeply. So forward to the isotherm, right? So isotherm also we learn, Freundlich isotherm. Freundlich isotherm के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम्स के अंदर आते हैं, तो उसके जो ग्राफ है, ग्राफ पे से वो कैसे एक्सप्लेन किया जाता है और कैसे समझा जाता है, राइट, वो हम समझने की ट्राई करेंगे. तो वी प्लॉटेड द ग्राफ x by m वर्सेस टेम्परेचर, राइट, प्रेशर. सो according to Freundlich equation, it said x by m is equal to kp raised to 1 over n. So it gives the value of absorption gas and it is a different at different temperature. So उसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा. So what does it shows? It shows that the graph between x by m, x which is absorbate and m that is the mass of gas, volume of gas that is absorbed on that absorbent, right, and the p is a pressure. So according to this graph we can say that this is the temperature T1, temperature T2 and temperature T3. तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन है T1, T2 और T3, राइट, तो ये सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा, हाईएस्ट टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर होगा, राइट, और ये लो होगा. क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, राइट, जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, राइट, वैसे वैसे उसका जो है वो एब्सॉर्बन, जो एब्सॉर्ब होने की कैपेसिटी है, दैट विल डिक्रीज. सो वी कैन से दैट द T1 हैज हाई टेम्परेचर, T2 हैज हाई टेम्परेचर देन T3. In this case, we can say that the T1 has less absorbance because at the T1 high temperature पे absorbance decrease होगा, right? So, लेकिन ये जो आप लाइन देख रहे हैं, right? तो क्या हुआ, ग्राफ ने कर्व लिया है, तो आपको लगेगा कि ये कर्व ऐसे रहेगा, नहीं, जैसे जैसे एक टाइम ऐसा आएगा कि वो स्टेबल हो जाएगा, वो that means it does not affect, कितना भी आप प्रेशर बढ़ा लो, कितना भी आप वॉल्यूम ऑफ गैस बढ़ा लो, फिर भी वो स्ट्रेट लाइन ही रहेगा. वैसे ही हमने लिया था x log x by m, log x by m वर्सेस log p, तो क्या मिला था हमें, स्ट्रेट लाइन, राइट. सो वी गेट द वैल्यू 1 over n and this is log k, right. So according to Freundlich isotherm, from the graph the question can be asked in your board exam, so be prepared. If you have any doubt related these two graph, you can comment on this video, so I will tell you the answer. Okay, so these are the absorption, that is a Freundlich isotherm. Okay, we talk about in the concern with gas, right, but what happen if we taken it is in a liquid phase? So nothing will change, it will change the concentration. The graph can say that x by m is equal to kc raised to 1 over n. C means concentration, right. So this is the basic difference, Freundlich isotherm, in the comparison of gas and concentration liquid phase, right. Now the application, that is already we डिटेल डिस्कस, एप्लीकेशन इसकी बहुत ज्यादा दी हुई है आपकी टेक्स्ट बुक में. जैसे एप्लीकेशन है जो 6 से 7 आपको टेक्स्ट बुक में दी है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस की है, लेकिन फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, राइट. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कैटालिसिस, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस. अब हम बात करते हैं कैटालिसिस. सो कैटालिसिस के बारे में सबसे पहले बर्जिलियस ने बताया था in 1835,
राइट। बेजिलियस नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने कैटालिस्ट की डेफिनेशन दी थी। कैटालिस्ट की डेफिनेशन आपको ऑलरेडी मालूम ही है। द कैटालिस्ट मींस इट इज टेक पार्ट इन द रिएक्शन एंड इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, बट इट डज नॉट टेक पार्ट इन रिएक्शन एज अ केमिकली एंड एज अ क्वांटिटेटिवली। दैट मीन्स कि कैटालिस्ट ऐसी एक चीज है जो रिएक्शन के अंदर पार्ट तो लेगी, रिएक्शन का रेट भी डबल करेगी, राइट, इंक्रीज भी करेगी, राइट, लेकिन जो बाद में हमें प्रोडक्ट मिलेगी उसमें कैटालिस्ट नहीं मिलेगा। दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड कैटालिस्ट। सो आपके टेक्स्ट बुक में एक एग्जांपल दिया है KClO3, इट गिव्स KCl प्लस O2। चलिए तो इसको बैलेंस कर लेते हैं, ट्वाइस 3 2K 2Cl, so here so this reaction is occurred in the presence of any catalyst, right। अगर हम इसकी बात करें बिना कैटालिस्ट के, ये रिएक्शन जो है हाई टेम्परेचर पे, दैट विल आई थिंक मोर देन 300 टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होगी, राइट। लेकिन इसके अंदर हम एक ऐसा कैटालिस्ट ऐड करेंगे जिसकी वजह से इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो जाएगा और विल गेट द रिएक्शन प्रोडक्ट एज फास्ट एज, राइट। सो हम यहाँ पे Mg एज अ कैटालिस्ट यूज करेंगे, राइट। तो इसका जो रेट है और क्लोरीन का रेट KCl और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होने का वो डबल हो जाएगा और वो टेम्परेचर भी डिक्रीज कर देगा। क्या होगा, वो टेम्परेचर भी डिक्रीज कर देगा। सो वी कैन से दैट द कैटालिस्ट इज नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन बट इट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा भी एक है जो हैबर प्रोसेस है, राइट। हैबर प्रोसेस में भी हमने देखा है कि एमोनिया का प्रोडक्शन है, उसमें हम क्या करते हैं N2 + 3H2 विल गेट 2NH3, राइट। सो अगर इस वो हम किसकी प्रेजेंस में करते हैं, Fe की प्रेजेंस में हम करते हैं, राइट। सो वी कैन से दैट द कैटालिस्ट टेक पार्ट, राइट। सो इसमें भी दो पार्ट आते हैं, पॉइजनस प्रमोटर्स एंड पॉइजनस। सो नाम पे से ही हमें नाम उसका जो एप्लीकेशन है वो हम समझ पाएंगे। प्रमोटर्स मींस इट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, राइट, and the poisonous means it decrease the rate of reaction, right। so that means कोई भी रिएक्शन का हमें रेट बढ़ाना हो, अगर हम इसके अंदर कोई कैटालिस्ट ऐड करते हैं और उसका रेट बढ़ता है तो हम उसको बोलेंगे कैटालिटिक प्रमोटर्स, और अगर उसको कोई कैटालिस्ट ऐड करने से उसकी जो प्रोडक्टिविटी है और रेट जो है डिक्रीज होता है, दैट मीन्स हम उसे बोलेंगे पॉइजनस। सो these two type of promoters and poisonous reactants are there। Now we are going to talk about homogeneous catalyst and heterogeneous catalyst। Already we know that what is homogeneous and heterogeneous, in which the same phase, the reactant and the catalyst, the reactant and the catalyst, right। so the reactant and the catalyst has same phase, then we can say that is homogeneous। दैट मीन्स यहाँ पे हमने सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट किया है, किसकी प्रेजेंस में, कौन सा कैटालिस्ट यूज किया है, नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन का फेज कौन सा है, गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड का कौन सा है, गैसियस फेज है। ऑक्सीजन का भी गैसियस फेज है। सो हियर द रिएक्टेंट एंड द कैटालिस्ट हैव अ सेम फेज, सो वी कैन से दैट इज होमोजेनियस। एंड हेटेरोजेनियस मींस द रिएक्टेंट हैज a different phase and catalyst has different phase। so in the Haber process what will happen, the reactant is a nitrogen and hydrogen, both are gaseous phase, and the iron which is catalyst which is in solid phase। so we can say that this is the homogeneous and a heterogeneous reaction, right। so now आज के लिए इतना ही है। if you have any doubt related this topic then text me or else WhatsApp me, right। subscribe us and share।